Hello friends, I'm Col R K Sinha. Today I'm going to cover the topic India in next 5 to 10 years. Why I have chosen this topic is because this question is often asked in SSB, and if you know this, then with the help of this you will be able to do well in your group discussions as also in lecturing. इसलिए इस टॉपिक को मैंने चुना है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझें. इसमें मैं अपनी थोड़ी कमेंट्रीज भी दूंगा. सो लेट अस नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन. क्यों जरूरी है रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने को? बट पहले इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लेट अस सी एज टू व्हाट इज दिस. बिफोर 2014 means before this government had come, India was constructing only 3 kilometers of road every day. But now we are constructing around 40 kilometers. यानी कि 2014 के पहले हम हाईवे सिर्फ 3 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे थे, जो आज के दिन 40 किलोमीटर्स हो गया है. एंड द NHAI aims that it will go to 100 kilometers very soon. Now, what is the impact of this? ये रोड कंस्ट्रक्शन से होगा क्या? ये रोड कंस्ट्रक्शन से चीजों का स्पीड इतना तेज हो जाएगा, लोगों के मूवमेंट इतने तेज हो जाएंगे that it will affect the GDP fast. So speedy road construction has started moving the goods and services move much faster, thereby speeding up the GDP. Not only that, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इस देश में 3 ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां की इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट्स भी लैंड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी किया गया. सो देयरफॉर दिस विल हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट एंड इवन ड्यूरिंग वॉर. चलिए अभी दूसरा हम देखते हैं एज टू व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नो, द एंटायर वर्ल्ड हैज गॉन डाउन इकोनॉमिकली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19. ये तो आपको मालूम ही होगा कि कोविड-19 के कारण हम लोग बहुत बुरी तरीके से, पूरा विश्व इसके चपेट में आया और जीडीपी सबकी नीचे हुई है. But India has become the fastest growing economy, and India is expected to achieve 8.2%, which is the latest what IMF has declared. It has brought down from its previous prediction of 9%, and these predictions are by international raters like Moody, Fitch, IMF and World Bank. In the next 5 years, our GDP will reach around 6 trillion economy. We had planned, हमने प्लान किया था that India की इकोनॉमी जो अभी presently around 3.01 trillion है, उसको यथाशीघ्र as soon as possible it should become a 5 trillion economy. Now in this I would like to tell you and add another factor that you must be knowing. एक और बात आपको बतानी चाहूंगा कि इंडिया ने प्लान किया था दैट बाय द एंड ऑफ मार्च 22 वी शुड बी एबल टू डू एन एक्सपोर्ट ऑफ $400. यू विल बी प्लीज टू नो, आपको ये जान के खुशी होगी कि ये टारगेट हमने अपने टारगेट डेट से 9 दिन पहले, 9 days बिफोर दैट वी रीच दिस टारगेट, which shows how fast India is growing. एक और बात इसमें ऐड कर दूं. Let me add one more thing, and that is India has now decided and set a target, और एक टारगेट बनाया है that by 2030 India will be exporting $1 trillion. Right. I'm sure you will understand that if the GDP grows, then the poorest of poor get its share
and then the government has got a lot of money, and then the government is able to spend on many other things. Right, friends. Now let's get to know what is this Aatma-Nirbhar Bharat and how it is going to change India in 5 to 10 years. ये कैसे इंडिया को बदलेगा? After the launch of Aatma-Nirbhar Bharat Abhiyan, Self-Reliant India Mission, the government has introduced rupees 20 lakh crore economic stimulus package. Now ये rupees 20 lakh crore economic stimulus package है क्या? ये उनको दिया गया है कि आप अगर ग्रो करेंगे, आप यहाँ पर बनाएंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे और इसके कारण देयर इज अ लॉट ऑफ इफेक्ट दैट इज विजिबल. द इफेक्ट्स आर विजिबल एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इज बीइंग फेल्ट इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एज ऑल्सो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन सारे एरियाज में बहुत कुछ डेवलपमेंट नजर आ रहा है. We are now manufacturing our own aircraft. I'm sure you know we are making Tejas 1, we are making Tejas 2. We are talking about 5.5 generation aircraft such as AMCA. और ये सारी दुनिया को नजर आ चुकी है. वो इसलिए क्योंकि दुनिया को ये पता चल गया है कि इंडिया अपने यहां बनाएगा. आपकी याद दिलाऊं अगर मैं, तो वेरी रिसेंटली L&T एंड साउथ कोरिया ने मिलकर के हमारे यहां होवित्जर बनाया K9 वज्रा, जिसको 2 साल के अंदर में बना करके उसको डिप्लॉय भी कर दिया गया. नाउ व्हेनेवर यू मेक समथिंग, जब भी आप आत्मनिर्भर होते हैं और अपने देश में बनाते हैं, यू मेक इट इन योर कंट्री, देन योर डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री गोज अवे. 1, 2, it is much less costlier. बाहर से जब आप कुछ खरीदते हैं तो उसमें बहुत कॉस्ट होता है. तीसरी बात, हमारे देश में कोई भी इक्विपमेंट हमने बनाना है तो हमारे यहां बर्फ भी है. वी हैव स्नो ऑल्सो, वी हैव माउंटेन्स ऑल्सो, वी हैव डेजर्ट्स ऑल्सो, वी हैव प्लेन्स ऑल्सो. सो वी हैव टू टेस्ट इन वेरियस कंडीशंस which any weapon which is outside may not suit you completely, and it takes a lot of time. So now friends, you will be happy to know that we are making our own guns, we are making our own howitzers, we are making our own aircrafts, we are making our own submarines, and there is tremendous amount of interest that has been shown by the rest of the world. और अगर ये होगा तो हम कम पैसे में अपने आप को बहुत मजबूत बना पाएंगे. और नॉट ओनली डिफेंस, आत्मनिर्भरता हमें और चीजों पे होगी. ये बड़े शर्म की बात है दैट इवन भगवान गणेश की मूर्ति चाइना से बन के आती थी. क्यों? हमें नहीं बनाना आता. वी कैन ऑल्सो मेक इट एंड वी हैव स्टार्टेड मेकिंग इट. एंड वंस वी चैलेंज आवर पीपल, आई एम सर्टेन विल मेक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड थिंग्स अनलाइक चाइनीज. राइट, सो यू हैव अंडरस्टूड आत्मनिर्भर भारत. So now let us see as to what is National Monetization Pipeline. इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, before we go any further, let us first understand what is monetization. Monetization का मोटा मतलब मैं आपको समझा रहा हूं. कोई चीज है, वो आपके पास एसेट है, लेकिन उससे कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा केस हम लेते हैं किसी रेलवे स्टेशन का. एक मेन रेलवे स्टेशन है, उसमें सब कुछ है, लेकिन अगर उसके टॉप पोर्शन को हम किसी कॉरपोरेट को या किसी भी बिल्डर को देते हैं कि आप अगले इतने साल के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो ये चीज हमारी होगी, गवर्नमेंट की ही रहेगी. बट देन दे विल मेक सम गेस्ट हाउसेज और सम होटल्स, एंड ये चीज जो एसेट है वो हमें पैसे पे करने लगेगी. उसी तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं. हर जगह स्टेडियम्स हैं. नाउ स्टेडियम्स, जब खेल होता है बहुत जरूरी है, पर जब खेल नहीं होता है, कैन इट बी गिवन टू समबडी हु विल लीज इट फॉर कपल ऑफ इयर्स, मे बी 10 years, 6 years,
and big marriages or big any major occasion that has to be conducted, they can get it conducted there, and they will, whenever you want, you can play your matches also. Look at the amount of humongous money, बहुत सारा पैसा हम लोग इससे अर्न कर सकते हैं. India has therefore launched national monetization pipeline, which will raise about rupees 6 lakh crore in the next 4 years, just by leasing some of our dead assets. Dead assets कहने का मतलब ये कोई assets dead नहीं है, लेकिन assets हैं, लेकिन हमारे पास वैसे ही पड़े हुए हैं. The country has just started realizing its potential, and without doubts, और मुझे कोई शक नहीं, that we will be on road to be world leader. आपको एक इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूं मैं कि 2021-22 जो ये अभी खत्म हुआ, उसमें 96,000 करोड़, ये सिर्फ बिगनिंग है, 96,000 crore has already been earned by the government under national monetization pipeline. Have you understood, friends? So let us now see something else. The next important point is expenditure on crude oil. इसके पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को डील करूं, आपको यह बतला दूं, let me tell you as to what are those 3 places where the government has to spend the most. One is crude oil, where billions of dollars. India is currently spending a whopping $62.7 billion on purchase of crude oil. और ये क्रूड ऑयल बाहर से खरीदा जाता है, इसका मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकता है, और अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज, and if such an important thing fluctuates, it is very difficult to plan many other things, right? तो एक तो मैंने बताया कि 3 वो जगह जहां गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करना होता है, and those 3 places are, one is crude oil, purchase of crude oil. The second is weapons that we purchase from outside, and the third is gold. Now let me, first of all, let me complete this crude oil, and then at the end I will also tell you about what are we doing about weapon and what are we doing about gold. So as I told you before, जैसा मैंने पहले आपको बताया, that $62.7 billion खर्च किया जा रहा है, is being spent by the government in purchase of crude oil, and this is not the current price. Currently the crude oil has gone up, right? This being aimed to be reduced as India is looking for alternate source of energy. अब ये इतना क्रूड ऑयल को खर्च को कम करने के लिए इंडिया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहा है. व्हाट आर दे? रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन. अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो दिल्ली में गुड़गांव में स्टैब्लिश किया गया है, जिसको बहुत ख्याति मिल रही है, एंड वी आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. गॉड हैज बीन वेरी काइंड. भगवान हमारी तरफ बहुत खुश है कि हमें एक ऐसे एरिया में मेरे देश को रखा गया, हमारे और आपके देश को रखा गया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है. इसका मतलब वी गेट मैक्सिमम सनलाइट, and since we started drawing it early, today we are becoming almost self-reliant, and this also does not pollute. इसके कारण pollution भी कम होता है. और अगर ये energy plus green hydrogen plus various other things that we are doing, if we do all this, we will not have to purchase that much of crude oil. We are currently generating 44.3 gigawatt of solar power and 38.7 gigawatt of wind power, which happens to be the 4th largest in the world. और दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है. This is just the beginning. You will see the semiconductors being developed. Adani's, Tata's, all are into it. Many of our unicorns are into it. And soon we will be absolutely able to fulfill what our Prime Minister has said, that by
a certain year, India will have no footprint of carbon and will be world leaders in this also. You must find out the date. I will tell you in my next episode as to what is that date. So I had also told you that gold के लिए क्या कर रही है दुनिया. Now gold के लिए, if you the golds in the temples right now belong to the temples. It should belong to the temples, but if they are only monetized, like I taught you in the previous slide, India will have humongous amount of gold and we will be able to get a lot of money. We will be able to print a lot of dollars, not dollars exactly, rupees. What are we doing about the purchase of arms? In my previous slide, हमारे previous slide में मैंने आपको बताया कि अब आत्मनिर्भरता के कारण गवर्नमेंट ने पास किया है that good 68% of the equipment will be constructed in the nation, and this is just the beginning. Okay, let us now move to the next. So now the next indicator of where will India be in the 5 to 10 years. Friends, बहुत खुशी होती है मुझे बतलाने में that as of February 2022, India has 90 unicorns with a total valuation of $295.99 billion, and hundreds are there in the pipeline. In fact, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, then we are almost 96 unicorns. तो ये यूनिकॉर्न होते क्या है? यूनिकॉर्न, ये जो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में आप सुन रहे हैं, वो जब $1 billion का हो जाता है, तो when it becomes $1 billion, then it is given the status of unicorn. So we, as of today, when I am talking to you, there are 96 unicorns and we are expecting to go much beyond 100. Their growth per year is in geometric progression in this country. Besides providing employment, the unicorns are large industries in infant form. ये कह के मैं क्या कह रहा हूं? यूनिकॉर्न जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है, एक दिन ये कंपनी का शेप ले लेती है. और आई हैव नो डाउट इन टेलिंग यू दैट इन द कमिंग 5 years they will do what California did to the United States of America. कैलिफोर्निया में और ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स हमारे थे, और वही स्टार्टअप्स को अब हमने स्टार्ट किया है. और इसलिए मुझे पूरी आशा है, आई एम सर्टेन, in fact the whole world is certain that India is going to emerge as a major power, and these unicorns will bring a number of industries. So let us now move to the next point. Right, so now let's talk about what is interlinking of rivers and how it is going to help the nation in becoming a superpower. Now, as you know that our country is very lucky that good 65% of the population are linked with agriculture and they live in villages. And they have tremendous knowledge. They may not know ABCD that much, but they have fairly good knowledge about what is done for the agriculture. They have the knowledge and will and the perseverance to increase the crop yield. The only thing they need is water. The interlinking of river has been ordered by Supreme Court in February 2012. I agree that there has been delay, but then you know that the country does not have that type of money. But once again, this has been taken very seriously and the rivers are being connected, though slowly, but the work is gathering momentum, and I am certain that in the next 5 to 10 years, every Indian farmer will start getting 3 crop production per year. This is going to be a game changer. जो मैंने ये कहा 3 crop production, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पानी नहीं पहुंचता वहां रेन वाटर के कारण, रेन वाटर के जरिए जो ग्रो होता है, दैट मीन्स अ फार्मर इज एबल टू ग्रो ओनली 1 crop
because if it is dependent upon the rainwater. But when the river waters, will be connected, the farmers will have sufficient water. Every farmer will be able to have 3 crops. Imagine, you know the condition today when I am broadcasting this, when I am recording this, that India has asked the WTO, can we feed the whole world? Friends, you know the Ukraine and Russia conflict is going on. They were the major wheat producing nation. Now the whole world, because of this war, is almost on the brink of not having enough wheat. And who is that country who in the present condition, जबकि रिवर्स पूरे लिंक हुए नहीं है, तब भी हमने परमिशन मांगा है, और अभी अभी इजिप्ट ने भी और बहुत सारे देशों ने हमें ऑर्डर किया है. अभी जो द ऑर्डर दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम इजिप्ट इज दैट दे विल एक्सपेक्ट 1 billion tons of wheat. Imagine when we will start feeding the whole world, our 65% of the population, which is poor, will become rich. And once they become rich, then they will demand the services to grow. They will demand the manufacturing to grow. They will require tractors. They will require many machines. They will require school, college, hospital, everything. And that is where, since all these 3 things are interlinked and interdependent, the growth of the nation only because of interlinking of rivers is going to be humongous, and it is going to put us into double digit of GDP. Let us now go on to so the next aspect of India's growth is what we are doing towards electric vehicles. You know, friends, the amount of pollution we are creating on our doorstep every day. But the country is now moving towards electric vehicles, and for that we are going for lithium ion batteries, aluminum ion batteries, iron ion batteries, and all these things are being worked out. ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि इनकी बदौलत हम वी आर रिलीव्ड ऑफ नॉट ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल. दिस विल ऑल्सो रिड्यूस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, एंड डेज आर नॉट फार, और ये दिन बहुत दूर नहीं है when none of the vehicles will need the costly petrol and diesel. This will also reduce the carbon emission, thus reducing the pollution, which is a must if we have to live healthy. इसके साथ साथ एक बात मैं बता दूं, vehicles are one of the main reason why Delhi, which is the capital of our country, is considered the most polluted capital in the world. And friends, एक और डेटा आपको जानना चाहिए कि 66 out of 100 most polluted cities are in India. Don't you think that when all these things will go away, and in 1 to 2 years we'll be having electric vehicles, electric buses, electric trains, the pollution will totally reduce, our health will improve, our GDP will grow, and we'll save tremendous amount of money. बहुत पैसों की सेविंग हो जाएगी, और हमारा रिलायंस भी खत्म हो जाएगा कि हमें पेट्रोल और डीजल दूसरे देश से खरीदना है. So friends, today I thought in the series of many lectures that I would be presenting to you, I must talk as to where the country will be landing in next 5 to 10 years. The things that I discussed with you were road construction, what will be its effect, GDP growth, which we are going to grow double than most of the nations. Then it is Aatma-Nirbhar Bharat, where we are going to construct, manufacture many things. Then we spoke about national monetization pipeline, in which many of the dead assets which are lying idle, they will be giving us many lakh crore rupees in the coming 4 years.
Then we discussed about the crude oil, on which the amount of expenditure that we were spending and how it can be brought down. We also spoke about the electric vehicle bill, which will run on electricity or which will run on other sources of energy and thereby reducing the pollution. We also spoke about the unicorns, which we are almost touching 100 as of the day that I am speaking to you. And of course, finally, I spoke about interlinking of rivers, with which the farmers will get much water, and this much of water will allow them to grow 3 crops per year, and therefore will be able to feed the whole world. Now, these were not the only things on which I wanted to speak about. Some other day, I will speak about some other points because of which the nation is growing. And I am certain that with all this knowledge, even if you understand it well and if you speak even half of it, the SSB will be a place where you'll go with your collars up and you will be able to speak very well. Thank you so far. Now, see you in the next.